Hello everyone, as promised, we are going towards the lecture number 2 after the overview what electrochemistry is. Let's start with the introduction part what electrochemistry is and first of all let's look at the introduction part. Introduction part. In introduction first we are going to study what electrochemistry is. Electrochemistry is that branch of chemistry which deals with the production of current through spontaneous chemical reaction. Means it is the branch of chemistry, it is that branch of chemistry which deals with the with the production of current from spontaneous chemical reactions. Full stop. Okay, this is what electrochemistry is. Now, what's the importance of electrochemistry in our life? We understood it is the production of current from spontaneous chemical reaction. This is called as electrochemistry. Okay, or in other words, we can call it movement of ions, chemical movement of electrons. Yeah, movement of ion. That is called as electrochemistry. Okay, so we are going to study about this, and now I told you that it is spontaneous chemical reaction. Spontaneous means which is occurring by its own self, without any external force. That is called as those type of processes are called as spontaneous processes. So, for example, falling of a झरने का गिरना जैसे, ठीक है, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये झरना ऊपर से गिर रहा है जब नीचे आ रहा है, ये एक तरह का क्या है, एक तरह का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, अब जब हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की बात करते हैं तो किस चीज की बात आएगी बेटा, गिब्स एनर्जी की बात आएगी। गिब्स एनर्जी। नाउ सर यू टॉकिंग अबाउट गिब्स एनर्जी। अब सर ये गिब्स एनर्जी कैसे आप कह सकते हो? व्हाट इज गिब्स एनर्जी? इन क्लास 11 वी स्टडी अबाउट it is that kind of energy which is you it is that kind of energy which is used which is used for doing some useful useful work useful work उसको कहते हैं गिब्स एनर्जी। and here what we are doing that if we are the reaction is spontaneous matlab that gives energy, that the energy which is called as gives energy is doing some useful work, that is the production of current, that is the production of current through spontaneous chemical reactions. If it is del G is spontaneous, what will be the value of the reaction is spontaneous, what will be the value of del G? Del G is going to be negative, gives energy is going to be negative. In case of equilibrium, del G is equal to 0, and in case of non-spontaneous reactions, del G is equal to positive. So we all know that we have studied all this in our previous classes, especially in class 11. So this gives energy. Now, what is the importance of तो बता देते हैं. You can note down a definition first. If you want to note it down, you can note down a definition. Pause करो, definition note करो. So when we're talking about what is the importance of electrochemistry, importance of electrochemistry of the topic. What is the importance of electrochemistry in our life? As we all know, we can see that today's generation, today's world, the dependency on fossil fuel is, all the nations are actually trying to decrease the dependency on the fossil fuel in terms of transport. So they are preferring electronic vehicles. This is the biggest example. This is the biggest application of electrochemistry. Also, the fact that we are using electrochemistry in our mobile phones, in our toys, okay, in
other devices in watches and etc etc etc, we are using batteries. Also the fact we will be moving on towards the space technology, where space technology, spacecraft, we are using fuel cell. Okay, all these things are the application of electrochemistry. That is the importance of electrochemistry in our life. Now one more thing, electrochemistry is not only related to electronic devices, it is also the in the human body, means transfer of signals through neurons to the brain. That is because this is also electrochemistry. Electrochemistry is also the production of energy. When we feel weak, we are going to take the glucose, and we are going to take the glucose, we are producing energy. That is also electrochemistry. Okay? So this is all the importance of electrochemistry in our life. So I have told you कि electrochemistry का importance क्या है in electronic devices. In electronic devices. Then in electronic devices के बाद in space programs, space programs. Uh, then in not in only in space program, in also in nuclear war, या nuclear war नहीं बोल सकते, in defense technology, in defense technology. ठीक है, and at the last we can call it as in vehicles, in vehicles in the form of EV vehicles. ठीक है, and another one in human body to transfer messages or signals from with the help of neuron, through neuron, into the human brain, into into the human brain. This is also the application. These are also the application of electrochemistry and importance of electrochemistry. Now, as we are moving forward, we've done the introduction. As we are moving forward, we have done the introduction part. We are going to move towards the uh, main topic, that is Daniel cell. So let's look at the construction of Daniel cell. Acha, when I told you about when we are discussing about this what electrochemistry. In electrochemistry, the spontaneous reactions are actually redox reactions. Spontaneous reactions are what? Spontaneous reactions are redox reactions. Redox मतलब क्या सर? Redox मतलब क्या? हाँ, redox मतलब reduction and oxidation. Reduction and oxidation. Or oxidation and reduction, whatever you want to write. So, we are familiar with this topic, what is reduction and what is oxidation. Let's look at what reduction is, what oxidation is. Reduction is what? Removal of oxygen and addition of hydrogen. And addition of hydrogen. This is called as reduction. Similarly, if we talk about oxidation, means addition of oxygen, addition of oxygen, you might already know familiar with this, addition of oxygen and removal of hydrogen. Stop. Now, in terms of electron transfer, the gain of electron is called as is reduction, and
The loss of electron is oxidation. Loss of electron is oxidation. Let's take an example. Let's take an example. Let's understand this through an example of a cell reaction. Let's take example. Zn plus Cu2 plus gives Zn2 plus Cu. Okay. This is a cell reaction for Daniell cell, and in Daniell cell we can see that this is solid, this is aqueous, this is now aqueous, and this is now into solid form. Okay. Now we can see that the zinc here, the valency of a zinc is 0. It's losing its 2 electron. It's becoming 2 plus 2. We have the valency of zinc, means that it is the loss of electron. When electron loses, what happens? It is oxidation. Similarly, if we look at this copper 2 plus, it requires 2 electrons, 2 positive charge, and it's getting 2 of the electrons from zinc. So what happens? It is called as reduction. It is regarded as reduction. इसी को क्या कहेंगे बेटा? रिडक्शन कहेंगे. अब अब बेटा आपने तो बोल दिया सर कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. सर एक और टर्म यूज होता है. एक टर्म जो यूज होता है जनरली, उसको कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट. क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट. और जो ऑक्सीडेशन कर रहा है, सॉरी, जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिडक्शन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. चीज है. ठीक है. रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारे इस तरह से कुछ रिएक्शंस चलती है. ठीक है. इसी को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस या स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन. यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट. Regarding reduction and oxidation, what reduction and oxidation are, what is the definition of oxidation, what is the definition of reduction, what, in terms of electron gain, in terms of loss of electron, and in terms of example. You can note it down. ठीक है. Now moving on further with कौन सा टाइप का सेल हम देखते हैं अब? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल, ये गैल्वेनिक सेल. एनसीईआरटी बुक दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड वन लाइन. क्या मेंशन किया है? उन्होंने वही मेंशन किया है कि वी हैव स्टडीड दी लर्नड अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल. नथिंग मोर इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी बुक. लेट्स सी दैट according to what the syllabus is prescribed. So we are going towards the cell. What is types of cells? Types of cells. अब सर टाइप्स ऑफ सेल्स जब आप पढ़ा रहे हैं, पहले टाइप्स ऑफ सेल्स देख लेते हैं. दो तरह के सेल्स होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल. वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अनदर इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. In electrochemical cell, we can see that there is change of energy from इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है. ठीक है. यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलेगी, उधर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगी. ठीक है. तो हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी, हियर केमिकल एनर्जी टर्न्स इनटू electrical energy, turns into electrical energy. Here electrical energy turns into chemical energy. सर एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल सर गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल,
ठीक है, वोल्टाइक सेल, Lagrange cell, all these are what? These are the example of electrochemical cell. ठीक है, और we can call it as dry cell, सूखा cell, dry cell. सारे एग्जाम्पल क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के. ठीक है, ये एग्जाम्पल क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के. ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ एक और एग्जाम्पल क्या आप बता सकते हैं, फ्यूल सेल. ठीक है, और एग्जाम्पल जो दोनों तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एग्जाम्पल है, दैट इज दी whatever we are using, lithium ion battery. Lithium ion battery, here also lithium ion battery, both are the examples of this is the examples of both electrochemical cell and electrolytic cell. When discharging, it is lithium, it is the electrochemical cell. In discharging, it is electrochemical cell, and in charging, it will behave as electrolytic cells. ठीक है, one in chemical energy turns into electrical energy, and electrical energy turns into chemical energy. Example: galvanic cell, Daniel cell, voltaic cell, dry cell, or as possible. Then lithium ion battery, discharging, lithium ion battery and charging. So this is all about the electrochemical cell, electrolytic cell. You can take the screenshots of both. Screenshot ले सकते हैं. ठीक है, अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे. अब बेटा हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल. ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल और ऑफ वोल्टेज सेल. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दैट. गैल्वेनिक, अब सर आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है. इसको समझने के लिए टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट हमने क्या किया, यहाँ पर we have taken here two of the beakers. Let's take beaker 1, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, थोड़ा साइड में, so that we can connect the electrodes also. ठीक है, connect the electrodes also. यहाँ पे बना देते हैं. ठीक है, two of the beakers we have taken, इन दो beakers लेते हैं, and in two of the beakers we have taken a rod of zinc, and we are taking a rod of copper, rod of copper. ठीक है, then we are going to have the solution of copper sulfate. This is the copper sulfate solution, Cu. Sorry, this is zinc sulfate solution, ZnSO4, and this is copper sulfate solution, CuSO4. CuSO4, zinc sulfate and copper sulfate. ठीक, now we are taking this. This is called as zinc rod. This zinc rod, or we can call it as electrode. This is copper rod or copper electrode. Sir, आपने word use किया electrode. Sir, what is electrode? Electrode is that which has both the type of the potential. Electrode is that which have both oxidation and reduction potential full stop. उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं. सपोज ये इलेक्ट्रोड है, इनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल इनके पास दोनों ही हो, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड.
नाउ सर इलेक्ट्रोड की तो आपने बात कर दी। हाँ बेटा मैंने इलेक्ट्रोड की बात तो कर दी है, ठीक है। मैंने ये भी बोल दिया है कि जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में। चलो इनको कनेक्ट करके देखते हैं। लेट्स कनेक्ट देम एंड फाइंड इट आउट व्हाट कुड बी डन विद दिस। इसके साथ और क्या किया जा सकता है। सो आई हैव टेकन सर्किट एंड कनेक्टेड this with a key, then with a voltmeter and so on, ठीक है। एंड सो वी हैव कनेक्टेड दिस। जब मैंने इसको कनेक्ट किया तो दो चीजें पॉसिबल। When I have connected this with zinc and copper rod together with a voltmeter, let's look at the process. This zinc 2 plus ion, we can see that zinc 2 plus ion and SO4 2 plus ion have already present in the solution. Similarly, copper 2 plus ion and copper SO4 2 minus ion are already present in the solution because the ion will dissociate. When we provide charge to zinc rod, what happens? The electrons from zinc comes into the solution. Electrons from the zinc, zinc will be started to lose its electron and they will be coming into solution in the form of 2 plus ion. zinc अपने आप को zinc lose करेगा और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे वो अपने 2 plus ions को बाहर करेगा, सॉरी, zinc 2 plus ions are getting out, it's getting negatively charged, it's getting negative, and they are get some electrons here. These electrons are actually moving towards the these electrons are actually moving towards the copper rod. Copper rod की तरफ move कर रहा है when they are moving from zinc rod to copper rod, and when they are moving from zinc rod to copper rod they are getting accumulated onto the copper rod. ये यहाँ से देख रहा है, यहाँ पे इसको मिला कॉपर का कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको फटाक से देखा 2 आयन, तो कॉपर ने क्या किया, फटाक से जाके कॉपर कॉपर 2 प्लस आयन क्या होगा, फटाक से जाके इससे स्टिक हो जाएगा, किससे, इस रॉड के बॉटम से। तो इट विल गेट, दिस विल गेट पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा positive, this rod will get positive in nature. Now we can see that the flow of electron is this, then flow of current, flow of conventional current, then a flow of conventional current would be from this to this, from copper to, this is the flow of conventional current. Flow of current क्या होगा, from copper to zinc rod, this is the flow of current. Here the solutions both are of 1 molar concentration, 1 molar, this is also 1 molar and this is also 1 molar, ठीक है, as 298 Kelvin temperature, and temperature here is 298 Kelvin, 298 Kelvin temperature. All these are called as standard condition for a particular uh, cell, ठीक है। So, so this is all about the galvanic cell. Now, what happens for this? For some reason, we can find that there's a movement of electron from zinc to copper rod, and movement of the current is from copper to zinc rod. This process continues, and after some time, what happens? Because of the production of electrons and movement of electrons, what happens? This zinc rod gets thinner and thinner, and copper rod gets thicker and thicker due to accumulation of ions on the copper rod, so deposition of the ions on the copper rod. So it gets thicker and thicker, and zinc rod gets thinner and thinner. When they get thinner and thinner and thicker, what happens? The solution has enormous number of ions with them on both the sides, because of the presence of enormous number of ions, which is being liberated by the zinc rod into the zinc sulfate solution and copper rod into copper sulfate. So what has happened? This solution gets more. This solution gets positive and this solution gets negative. When this solution gets positive with this solution get negative, what happens? ठीक है, तो होता क्या है? It stops the flow of electron from zinc to copper, which results in it also prevents the flow of current, flow of current from copper to zinc. It also prevents the flow of current. Then similarly in this case also what happens? It also it stops the inward flow of electron
into the electrode, hence the reaction stops. ठीक है, and it also prevents the flow of current, flow of current. अब सर यहाँ पे आपने दोनों चीजें बराबर बोली कि यहाँ पे यदि सोल्यूशन का पॉजिटिव, यदि सोल्यूशन ये पॉजिटिव होता जा रहा है, ठीक है, और ये सोल्यूशन यदि नेगेटिव होता जा रहा है, ठीक है, यदि ये पॉजिटिव होता जा रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है, सॉरी ये पॉजिटिव होता जा रहा है और ये नेगेटिव होता जा रहा है, तो क्या होगा कि सोल्यूशन का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, सोल्यूशन के आयंस फ्लो नहीं होंगे. इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस, what they have done is that they there is the use of we use salt bridge. क्या यूज करेंगे? We are going to use salt bridge. Let's look at what salt bridge is all about. हमने एक ब्रिज लगाया है यहाँ पर. इस ब्रिज के में हमने क्या किया, एक ब्रिज लगा दिया, वो इसको नाम दिया सॉल्ट ब्रिज. क्या नाम दिया इसका? वी हैव गिवन दिस नेम एज सॉल्ट ब्रिज. ठीक है, हमने इसका नाम सॉल्ट ब्रिज रख दिया. अब जब बेटा मैंने इसका नाम सॉल्ट ब्रिज रखा है, इसका नाम सॉल्ट ब्रिज रखा है, तो ये एक तरह का किस तरह का है ये? दिस इज द सॉल्ट ब्रिज इज, देख लेते हैं सॉल्ट ब्रिज क्या होता है. सॉल्ट ब्रिज, इट इज ए U tube glass rod having inert electrolyte, ठीक है, within it. अब सर you have used the word inert electrolyte. सर inert electrolyte क्या है? सर inert electrolyte वो electrolyte होते हैं which do not participate in the reaction. For example KCl, KNO3, ठीक है, KNO3, NH4Cl, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे हमारे क्या हो गए ये साथ. Now we are going to fill this KCl and the other into one of the electrolyte in this KNO या KCl. In KCl is electrolyte. We are going to fill it in the salt bridge. इसको हमने salt bridge में भर के रख दिया. ठीक है, we are going to fill this into the salt bridge. जैसे ही मैंने इसको भर के रखा इसमें salt bridge में, इसको मैंने इसके एक और यूज किया, एक पाउडर सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज अगर. अगर एक पॉजिटिव सब्सटेंस है, this this is a powder substance which makes the solution, which makes the electrolyte semi liquid in nature, which makes the electrolyte semi liquid in nature. KCl, अब सर K plus and Cl minus ions इसके साथ हो जाएंगे. अब because this solution has become more and more negative, तो ये क्या करेगा, K plus ions के साथ या Cl माइनस आयन पॉजिटिव हो रहा है ना सोल्यूशन, यदि ये पॉजिटिव हो रहा है और ये नेगेटिव हो रहा है बेटा सोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं, हाँ, तो ये पॉजिटिव सोल्यूशन, तो Cl माइनस आयन यहाँ पे छोड़ता चला जाएगा, तो Cl माइनस आयन इसमें छोड़ता चला जाएगा. Cl माइनस आयन विल कम अप, द Cl माइनस आयन को इसमें सोल्यूशन में छोड़ देंगे, इट विल मेक इट न्यूट्रलाइज. सिमिलरली यहाँ पर K plus ion will leave into the solution and it will make this solution as negative K plus ion. ठीक है, Cl minus ion and K plus ion. So this solution, and now what happens when it will release the ions as required in it? So this solution will, this particular cell will again start to work, and again start to work मतलब it will allow the proper flow of electron from one part of the electrode to the other part in a particular cell, one complete cell. So let's look at what is the importance of salt bridges. Salt bridge का क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है. अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज. देखते हैं बेटा क्या इंपॉर्टेंस है सॉल्ट ब्रिज का. भैया पहला इंपॉर्टेंस तो ये है, इट कंप्लीट दी सर्किट. ये सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता. इट कंप्लीट्स दी सर्किट, सर्किट को ये पूरे से कंप्लीट कर देगा. ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट यूज, इट मेंटेन्स दी
liquid liquid junction potential. Junction potential. Third point, it completes the circuit. It maintains the electro-liquid junction potential. It allows the flow of electrons regularly. ठीक है, it allows the flow of electrons regularly flow क्या बोलते हैं electrons के flow को ये maintain करेगा. So this is all about what? This is all about salt bridge. ठीक है, these are the importance of salt bridge. And here we move on to the one more topic, that is liquid junction potential. Sir, ये liquid junction potential क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा. First you can take the screenshot of this particular galvanic cell. थोड़ा मुझे टाइम दो बेटो, मैं चलो, let's move on to another liquid junction potential. Understanding what liquid junction potential is. Okay? तो इसको बना रहने देते हैं. Let's complete with what liquid junction potential is. Give me some time. वर्क ही नहीं कर रहा. What liquid junction potential is, इसको complete कर देते हैं. लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, तो देखते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. सपोज मैंने एक इलेक्ट्रोड, एक व्हीकल लिया. सपोज आई हैव टेकन अ व्हीकल एंड आई हैव टेकन ए इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, two of the electrode and it is divided by a junction. Junction is where two of the electrodes divided by two of the where there is multiple division, and all of them meet at particular junction, at particular section, that is called as junction. ठीक है, मैंने जंक्शन पे यहाँ पे कनेक्ट किया, यहाँ से मैंने सीधा कनेक्ट किया. अब व्हाट हैपेंस व्हेन आई कनेक्टिंग द जिंक रॉड, सपोज दिस इज जिंक एंड दिस इज कॉपर. ठीक है, ये सॉल्यूशन है. इनमें क्या हो रहा है बेटा कि जैसे जैसे आयंस एक्यूमुलेट होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज, जैसे द मोर एंड मोर नेगेटिव चार्ज एट द पर्टिकुलर रीजन कॉल्ड एज, व्हाट हैपेंस, इट गेट्स थिकर एंड थिकर. Get thicker and thicker, what will happen? It will struggle off on it. Totally the electron one of the to the part of the cell and electrode of the cell. So what is happening? This is called a junction potential, and the salt bridge maintains the liquid junction potential. इसी को कहते हैं liquid junction potential. Important salt bridge का तो देख लिया, what a salt bridge should be and what salt bridge is and how it is made of. What is the use of salt bridge and what is junction potential. ठीक है सर, अब आगे देखते हैं इसमें. तो लेट्स मूव ऑन टू व्हाट टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल. ठीक है, सो इन दिस प्लेस व्हाट इज हैपनिंग, वी आर हैविंग
Zn, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, हमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर Cu2 प्लस gains 2 electron and becomes Cu solid. It is aqueous now and this becomes aqueous. ठीक है, this is called as oxidation half cell. इसी को कहते हैं क्या, oxidation half cell. इसी को कहेंगे, this is called as reduction half cell. We called as reduction half cell, or it is called as left half cell. Left half cell कहते हैं इसको, and we call this here as right half cell. Left half cell and right half cell. ठीक है, both are same terms. So both are same term. Left half cell and oxidation half cell, reduction half cell and right half cell. So we are going to discuss this now. We have discussed already what oxidation half and reduction half is. अब sir, suppose we are applying potential to it. हमने इसमें क्या किया, एक पोटेंशियल अप्लाई किया. कौन सा पोटेंशियल अप्लाई किया, यहाँ पर मैंने एक पोटेंशियल अप्लाई किया. दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. रहने दो एक मिनट, ठीक है. I have applied a rheostat here. I have taken a rheostat, ठीक है, इसको से कनेक्ट कर दिया, ठीक है. एंड मैंने सपोज इसका पोटेंशियल इट इज सेट टू बी, पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज 1.1 वोल्ट. Potential of a cell is 1.1 volt. If we are, there are three conditions possible. You can take the screenshot of this oxidation of cell, ठीक है. अब देखते हैं बेटा, तीन possibilities इसमें. Let's look at three of the possibilities in this. One molar. This is also one molar, ठीक है. हाँ, this is copper rod. This is copper rod. हाँ, तो भैया अब क्या देखना है, we are increasing the potential. Now we have know that E is equal to 1.1 volt. The cell is having a potential of 1.1 volt. If we decrease the potential, the three conditions for E: increasing the potential, decreasing the potential, maintaining the potential for 1.1 volt. 1.1 volt, 1.1 volt. If we are increasing the value of E to 1.1 volt, what will happen? इसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट से बढ़ा देंगे तो क्या होगा? In this case, what will happen? The electrons will keep on moving from zinc to copper, and the flow of electron would be, the flow of current would be from copper to zinc. This will keep on moving. यहाँ तक अपना रेगुलर चलता रहेगा, ठीक है. So flow of electrons will be from zinc to copper, and flow of current is from copper to zinc. After some time, what happens? The reaction becomes normal and it attains the equilibrium. E is equal to 1.1 volt, where no movement of electron is there, no movement of electron, and no flow of current is possible. In the value of I would be 0 here in this case, and 1.1 volt. Suppose if we increase the potential from beyond 1.1 volt, 1.1 volt से और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा? When we are increasing the potential from more than 1.1 volt, so in this case what will happen? Or increase, the polarities will change. The polarities will change. How it will change? Let's look. Suppose we are increasing the potential, so the flow of electrons would be from copper to zinc. The flow of electrons
will be from copper to zinc, and flow of current will be from zinc to copper, and here the polarities will change. This will start to behave as एनोड, ये एनोड हो जाएगा इस केस में, एंड ये इस केस में इट विल स्टार्ट टू बिहेव एज कैथोड. दिस इलेक्ट्रोड विल स्टार्ट टू बिहेव एज कैथोड in this case. In this case, otherwise this left side is what? Always cathode. Sorry, this left side is always anode and the right side is always cathode. याद करने के लिए टर्म यूज द LOA and LOAN. Left side oxidation anode negative. Left side oxidation anode negative. And we can see that what is happening, zinc is starting to lose this electron, मतलब दो इलेक्ट्रॉन अपने रेगुलरली लूज कर रहा है, तो इट्स गेटिंग इनटू 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ कॉपर 2 प्लस के फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, एक्यूमुलेटिंग एट द रॉड, इट्स गेटिंग थिकर एंड थिकर. सो व्हाट इज हैपनिंग, इट इज रिडक्शन. हाँ, but in terms but if what happens if we increase the potential from more than 1.1 electron volt greater to 1.1 electron volt, then what will happen? अरे साइन उल्टे बन गया बेटा, ऐसा साइन होगा और ये ऐसा साइन होगा. यदि हम पोटेंशियल को 1.1 वोल्ट से ज्यादा बढ़ा देंगे तो what will happen? If the polarities will change. Polarities will change. लिख लेते हैं कहीं, polarities will change. Polarities will change. So this is how uh, the galvanic cell works. ठीक है. So in this particular topic we have studied about galvanic cell. In the next topic we will be studying about electrode potential and standard electrode potential. Thank you very much.